Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about the paper we are having, that is CTE for Teaching English Elementary School. So इस पेपर को कैसे तैयार करना है, how going to prepare this paper, last hour preparation, seriously last hour preparation. Sir, कल we have exam tomorrow, अब tomorrow and at the last hour हमें क्या करना है, just these questions, seriously just these questions, nothing more you guys need to do. Nothing more, I repeat, 100% पेपर ही यहाँ से होगा. तो अब आपने कहा सर इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द स्ट्रेटजी, अगर पेपर हमारा आगे होने वाला है तो क्या करेंगे, तो भी क्वेश्चंस ये वाले कर लेना यार, इनके बाद कुछ भी नहीं आने वाला. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू क्लियर इज ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स. सर पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट होगा, कन्फर्म है, तो क्लियर कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी problems areas in education for unprivileged kids or the students. I repeat, some problem areas in education for unprivileged. The very first. Come to the second point. Receptive or assimilative language skills. What do you mean receptive and assimilative? So receptive, yes we know. Assimilative क्या है, उसके concept क्या है, कैसे clear करेंगे, that is major point you guys need to clear. Jump up next part, that is 2 basic listening comprehension exercises for young learners. 2 basic comprehension, I repeat, 2 basic listening comprehension exercises for young children. So guys, those who really miss these questions, don't worry, यहाँ पे तो मैं डिस्कस भी करूँगा, आंसर क्या होंगे, लेकिन अगर खाली क्वेश्चन चाहिए तो जाना कहाँ, मेरी इंस्टा आईडी पे, वहाँ पे अभी मैं पोस्ट कर दूंगा. यू विल गेट ऑल दिस क्वेश्चन एट माई इंस्टा आईडी, that is @classicwayoflearning. So I hope you guys go there and follow there ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं. Come on, next one. There are some difficulty in teaching the English alphabet to learners. What are the some difficulties in teaching the English alphabets to learners? Then synthetic and semantic redundancy. Sir, what does mean by the redundancies? ये क्या होती है, कैसे क्लियर करते हैं. Different types of listening, process writing, teaching whole word identification. What does mean by whole word identification? Whole word. Word नहीं है, word a word. Whole word identification. इस पे क्वेश्चन आता है. Come on, next one. Teaching children with special needs, inclusive education. Approaches of teaching handwriting, difference between pre-listening and while listening tools or the task. I repeat the question. There is a difference between pre-listening and while listening tasks. Inclusive education, I have told you earlier. Developing listening skills, developing communication skills in students, writing is a process, characteristics of unprivileged learners. So the very first question was the same one. Teachers' role in teaching, learning and spoken language, and then condition and enhance language learning in classroom for primary learners. Okay, so this is the major point that we need to go through. The last 2 short notes. Get a suggestion for improving articulation and pre-writing preparation. Pre-writing preparation क्या है, उसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होने वाला है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे. Now time to jump up to next part, that is suggest some practical ways in which you can enlarge. I'm repeating, these are essay type questions now. So we'll come to the essay type questions. तो guys ये हैं वो 20 mark questions जो आपको ऑन टिप होने चाहिए. The first, suggest some practical ways in which you can encourage a healthy self-esteem among learners. Self-esteem कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी learners के बीच में, तो उसके कुछ ways हमें बताना होंगे. We need to explain the certain ways that can enhance the learning spirit in the learners. Okay, now the second one. Actually, the third question. What are the characteristics of unprivileged learners? Very first short note था. Yes, the very first short note. What are the characteristics of unprivileged learners? How can we make the present system of education useful for them? उनके लिए present system कैसे useful बनाएंगे? इसमें हम ऐड करेंगे inclusive education को.
जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन समझना हो प्लीज़ मेरे बीएड के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की वीडियोस मिल जाएंगी आपको. देन व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, उसको एक्सप्लेन करना है. एंड हाउ कैन वी ओवरकम देम. कहता व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लर्निंग टू रीड इन वंस मदर टंग एंड लर्निंग टू रीड द सेकंड फॉरेन लैंग्वेज. दिस इज L1 एंड L2. दिस इज नोन एज लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2. इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन आता है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आता है. गाइस मेक श्योर ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं. Why is listening an important skill? Yes, you guys need to clear the listening skill, writing skills, speaking skills and learning skills. चारों skills on tip पहुंची आपको. Why is the listening is an important skill? How can a teacher develop her students or their students? Now, listening skill in primary classes. Next one. In what manner do classroom opportunities? In what manner do classroom opportunities for oral expression? सर oral expression क्या होता है? जो टीचर बोल के समझा रहा होता है. टीचर जो बोलता है क्लास में ज़्यादा दिमाग में रहता है, हम उसको फॉलो भी कर पाते हैं. In what manner do classroom opportunity for oral expression help second language learners? Discuss in detail any 2 activities for reinforcing the spoken language skills. वो बतानी है आपने. Do the unprivileged need special English language learning programs? I repeat, do the unprivileged need special English language learning programs? How are those likely to be different from mainstream program? Mainstream program से अलग कैसे होंगे? Next, what is writing across the curriculum? ये confirm पेपर में आएगा. What is writing across curriculum? Suggest activities that would develop the writing skills of a young learners through various subjects. Writing skills बनानी है अलग अलग learners की through various subjects. What indicates, I repeat, what indicates would you use to access the speaking skills of primary school children? I repeat the question. What indicators would you use to access the speaking skills of primary school children? Discuss in detail. Jump up next one. What condition will enhance a child's language acquisition? मैंने पहले बोला लैंग्वेज एक्विजिशन में क्वेश्चन आएगा. सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन आपको ऑन टिप होना चाहिए. ये 100% पेपर मिलने वाला है. अगर आपने नहीं किया तो सीरियसली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार. देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज रीडिंग एज कॉम्प्रिहेंशन. आई रिपीट, व्हाट इज रीडिंग एज कॉम्प्रिहेंशन, उसको डिफाइन करना है. व्हाट इज टीचर्स रोल इन हेल्पिंग हर स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू रीड. हाँ जी, स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू रीड. स्टूडेंट कैसे रीड करते हैं, उनका तरीका क्या है, किन चीज़ों को फॉलोअप करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके ऑन टिप पहुंची हैं. कहता व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन. ये लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, हाउ टू डिफाइन इट. कहता हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड रीडिंग एक्विजिशन. रीडिंग अलग और लैंग्वेज अलग. क्वेश्चन कंफर्म आएगा. लैंग्वेज एक्विजिशन जो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बोला मैंने उस पर आता है. कहता हाउ डू वी डिसाइड गिवन राइटिंग टास्क सुटेबल फॉर पर्टिकुलर क्लास. एक क्लास के लिए सुटेबल है, एक के लिए नहीं है. अब कैसे किसके लिए और किसके लिए नहीं है हमें कैसे पता लगेगा. कह रहा आई रिपीट द क्वेश्चन. लिसन, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन राइटिंग टास्क इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर क्लास. उस क्लास के लिए ठीक है. लिस्ट द पैरामीटर दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड द सुटेबिलिटी ऑफ द टास्क. नेक्स्ट, व्हाई शुड ग्रामर गेम्स बी यूज्ड एज प्राइमरी क्लासेस. ग्रामर गेम सर ये कौन सी होती है. वो क्रॉस पजल गेम सर. बेसिकली हम नेम मेकिंग करते हैं सर. हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स को यूज करते हैं ना परफेक्ट मैनर. तो ये सारी कौन सी ग्रामर गेम्स होती हैं जिनको प्राइमरी स्कूल में यूज किया था कि बच्चे उसको बड़े आराम से क्लियर कर पाए. इसके पॉइंट्स कौन सा आपको क्लियर होना चाहिए. व्हाट आर सम डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग फाइनल ग्रामर टू बिगिनर्स. कहता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रोच ऑफ टीचिंग स्पेलिंग. अब टीचिंग स्पेलिंग की फॉर्मल और इनफॉर्मल अप्रोच होती है. यस होती है बिल्कुल. उसको क्लियर करना है. विच डू यू प्रेफर एंड व्हाई. अब आप एज अ टीचर एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट, why should grammar games be used in primary classes? Give example. Same question. What are the problems faced by unprivileged learners in learning English? So the very first short note, unprivileged children. Kara, what are the problems faced by unprivileged learners in learning English? What tips would you give to the teachers teaching English to these children? Why is it important to integrate writing and other subjects? इनको एक साथ क्यों करें, राइटिंग बाकी सब्जेक्ट्स को.
Describe any two activities to integrate writing with any other subject of your choice. Yes, come on to the last phase. See, this is the last phase. That is the last two questions. How does period knowledge, I repeat, period knowledge सबसे important होती है बच्चों को पहले से ही कहता, हाउ डज पीरियड नॉलेज हेल्प अस कंस्ट्रक्ट मीनिंगफुल आउट एज अ पैसेज टेस्ट, जो एक पैसेज टेस्ट में यूज होती है. गिव एग्जांपल ऑफ सम प्री रीडिंग एक्टिविटीज दैट कैन इन्वॉल्व द पीरियड नॉलेज, जो कि पीरियड नॉलेज में यूज होती है. कहता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रोचेस ऑफ टीचिंग स्पेलिंग. फॉर्मल और इनफॉर्मल अप्रोचेस ऑफ टीचिंग स्पेलिंग, वो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. कहता, व्हाट डू यू प्रेफर एंड व्हाई, इनमें कौन सी प्रेफर करते हो और कैसे. तो होपफुली यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. विश यू ऑल द बेस्ट.